Houthis, Hamas is out of the equation. So we are seeing an Israeli attack in Lebanon also as part of that strategy, because the aim is to uh, diminish or reduce the fighting strength of Hezbollah. And the fourth is the destroy the naval power of Iran, which they have already done. I believe some 9 to 10 ships have been destroyed. So considering these four objectives as part of the overall strategy, I give it the maximum 15, 20 days before this war should come to an end. Well, Major General Ranjan Kochar, I request you to stay connected with us. Now, viewers, as tensions escalate in West Asia, US President Donald Trump has launched a sharp attack on his predecessors over Iran's nuclear program. Viewers, in a strongly worded post on social media, Trump called the Iran nuclear deal brokered under Barack Obama the most dangerous transaction ever entered into by the United States. Posting on his platform Truth Social, Donald Trump claimed that if he had not terminated the 2015 nuclear agreement, formerly known as the Joint Comprehensive Plan of Action or the JCPOA, Iran would have acquired a nuclear weapon 3 years ago. He blamed former presidents Barack Obama and Joe Biden for what he described as a horrendous deal, saying that the world would look very different today had the agreement remained in place. Donald Trump's remark come as the US-Israel air campaign against Iran continues to intensify. Now, viewers, let us take you through the 2015 nuclear deal and Trump's withdrawal. Viewers, in 2015, then US President Barack Obama signed a landmark nuclear agreement with Iran, formerly known as the Joint Comprehensive Plan of Action or the JCPOA. Viewers, the deal aimed to curb Iran's nuclear program in exchange for relief from crippling international sanctions. Viewers, under this agreement, Iran agreed to cap uranium enrichment at 3.67% for 15 years, far below weapons grade levels. In return, the United Nations, European Union and the United States lifted nuclear-related sanctions, allowing Iran to gain access to global oil exports and international financial markets. Viewers, the agreement also extended Iran's diplomacy. Now, clearly, it's an allegation that has come in from the US President Donald Trump against his predecessors Barack Obama and Joe Biden. Viewers, I have still Major General Ranjan Kochar with me and Damodar Singh, defense expert. Rajan, Kochar, now how significant is the claimed that the Strait of Hormuz is being shut? Now, what implications it would have on the global maritime as well as the military? You see, already the impact has begun. I'm given to understand that oil prices in Europe have shot up by 44%. Because why this is happening is this is happening in anticipation of oil trade or oil shipping totally suspended from the Strait of Hormuz. And IRGC has made a very significant statement saying that vessels which will be plying from Strait of Hormuz will be subjected to an attack. So the economic consequences are quite drastic, I would say that, because it is not only oil, it is the LNG also is affected. And if you take example of India, 60% of our LNG requirement is coming from Qatar. And if
this pipeline or if this pipeline has been suspended, then it is going to have a problem on the domestic gas, on the households, and it will be having a very, very great effect on the inflation also. So the alternatives are, because as soon as Hormuz is closed, you have alternative supply chain routes. The first alternative is that we'll go back to Russia now. And already, I believe, negotiations have started with Russia as far as enhanced oil, because we had reduced Russian oil to a significant extent based on the sanctions imposed and tariffs imposed on us. But now I think it is quite understandable that these tariffs will no longer stand in the way of our national interest, and we will go back to Russia for an enhanced oil supply. Second is the alternative routes. So why the Cape of Good Hope? So what it will actually happen now is, because the Gulf used to take only 3 to 4 days, because now this supplies will take 25 to 30 days. So there'll be a prolonged or you increase in the length of the route, and transportation cost will go up. Secondly, the insurance cost will go up, because now if you see, this area is volatile, so the insurance companies are going to demand much more money. So I think, I mean, overall, countries in South Asia are going to be affected more than anything else, and we see an impact in Korea, South Korea manufacturing hubs, China, India in particular. So that is going to be the impact, and I hope this impact is not very long, because we have only 74 days reserves of oil in our country. And in case this conflict goes beyond the 74 days, then the effect is going to be drastic. But already the share markets have started, you know, gold and silver have actually gone up. So in the overall thing, in a short term, I would say that we'll be able to sustain this impact. But in case it goes beyond 6 weeks, that is a problem for India. मिस्टर दामोदर सिंह, नाउ जो यूएस है, क्या यूएस सोच सकती है अपने ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉय करे अगर उनके जो एयर कैंपेन है इसका अगर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करते हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि उनके ग्राउंड ट्रूप्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं? जय हिंद जनरल साहब, ये सवाल बहुत लाजमी और लोगों के ऐसे मन में शंकाएं हैं कि क्या यूएस ऐसा कर सकता है। और अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि ट्रम्प हैज आल्सो थ्रेटन दैट, बट एक चीज ध्यान रखना है कि दिस विल बी अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर यूएस। इट विल बी अ सुसाइडल, जैसा कि इनके साथ अफगानिस्तान में हुआ, इराक में हुआ। ट्रुप्स उतारना यूएस के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि ईरान की परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा इन्होंने पहले कंट्री में, इराक में, सीरिया में इन्होंने सोचा था। और इन्हें पता है ऑलरेडी, ये उसका स्वाद चख चुके हैं, इन्हें पता है उसका टेस्ट क्या था। और ऐसी कोई भी गलती मुझे नहीं लग रहा कि यूएस करने वाला है आने वाले समय में। ऐसा कुछ भी करना बहुत ज़्यादा सुसाइडल, क्योंकि ईरान की जनता भावनात्मक तौर से खामनेई से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई। ऑलरेडी इनका एक जो ये इनका परसेप्शन था कि खामनेई को मारने के बाद वहाँ की जनता में अपराइजिंग होगा या कोई भी इस तरह से रिवोल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे जनता इनको टॉपल डाउन करने के बाद रिजीम चेंज हो जाए, वो आसानी से होता हुआ नहीं दिख रहा। और इस परिस्थिति में अगर कोई भी ट्रुप्स यूएस के अंदर, यूएस अगर अपना ईरान के अंदर भेजने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है ये यूएस, इजराइल या कोई भी कंट्री, तो मुझे लगता है वो सुसाइडल हो जाएगा। अभी अचानक समय लगेगा, जब वहाँ रिजीम चेंज हो या लीडरशिप चेंज हो, उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो जरूर संभावनाएं हैं कि वो सस्टेन करे। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर की ऐसा कुछ भी करना लाजमी होगा या यूएस ऐसी कोई गलती दोहराए। दामोदर जी, ये जो लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं डिप्लोमेटिक मिशंस पे, जैसे यूएस एम्बेसी रियाद में, तो इसके क्या रिस्क और इम्प्लिकेशंस रहेंगे अगर इस तरीके से लगातार ईरान जो है हमला कर रहा है एम्बेसीज पे? देखिए, ईरान के पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसका जो इन हमलों का मकसद है वो सीधा सीधा अपनी जनता को भरोसा दिलाना कि हम लड़ रहे हैं, हम लड़ने में सक्षम हैं। वो अपनी जनता को भरोसे में रखना चाहता है कि कोई भी अपराइजिंग वहां पे ना हो, कोई भी इस तरह से और जो उनकी जनता का भरोसा है उनके आर्म फोर्सेस पे, वो बना रहे। दूसरी बात, उसका इन सभी देशों को एक सिग्नल है कि अगर हमारे आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो आप रिस्क में हैं, आपके ऊपर हमला हो सकता है, और वो कर रहे हैं ऑलरेडी।
उन्हें हालांकि ये पता है कि अगर जिस दिन ये सारे कंट्री एक साथ होकर अटैक करेंगे, ईरान नेस्तनाबूद हो जाएगा, ईरान का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। पर ये सारी जो कार्रवाइयां की जा रही है, अभी तक बहुत धैर्य दिखाया है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने, और आई अप्रिशिएट दैट कि दे आर रिफ्रेनिंग देमसेल्फ फ्रॉम काउंटरिंग द अटैक। बट ये जो चीजें चल रही हैं इस तरह से, इसमें मुझे लगता है कि ईरान ने अपने आप को अब बिल्कुल समझ लिया ही, करो या मरो, उनके पास जो खोने के लिए कुछ है नहीं ऑलरेडी। और इस तरह के जो अटैक कर रहे हैं वो इससे अपने मित्र देशों का भी जो भी उनके पड़ोसी देश है उनका भी भरोसा खो रहे हैं, दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और ये आने वाले समय में ईरान के लिए बहुत घातक साबित होगी। कोई भी देश हालांकि ट्रस्ट नहीं करेगा ईरान पे। और दुबई के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। आप अमेरिकन बेसिस पे हमला करते हैं समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा जो आप अटैक कर रहे हैं बाकी देश, क्या हासिल करेंगे इससे? मुझे तो नहीं लग रहा। इस समय लीडरशिप फेल्योर है ईरान का। ये बहुत स्ट्रेटेजिक सोच नहीं दिखाती ईरान की। और मुझे लगता है कि ईरान में अभी लॉलेसनेस की स्थिति है। वहां पे जो भी जिस बटालियन है जो उनकी जो जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो जब उनको टास्क दे दिए गए हैं कि आप मिडिल ईस्ट में ये कंट्री देखो, आप ये कंट्री देखो, इस तरह से करके उनकी टास्किंग हो रखी है और वो अपना काम कर रहे हैं। इंटरनल कोई भी कोऑर्डिनेशन या स्ट्रेटेजिक सोच इसमें नजर नहीं आती। और ये निश्चित तौर से ईरान के लिए कहीं भी फायदा पहुंचाने वाला कदम नहीं है।